भाई नैनो कितनी बीटअप कंडीशन में है यार. I mean, literally by the words. Specs on the paper and photos on the internet do not make or break a motorcycle. What really matters is how the motorcycle feels in the real world. So today we are going to the Java showroom to check out the 3 legendary motorcycles launched by classic legends under the name YEZDI. So let us get started. Finally, we have our hands literally on the new YEZDI motorcycles. First impressions, this motorcycle feels little heavier than Java 42 and the seat feels okay. It's not too firm, it's not too soft. On the touch, ऊपर से ऐसे टच करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि it is soft. However, हम बैठ रहे हैं तो it feels firm enough कि ऐसा नहीं लगेगा कि बैठ गए तो दबी गई सीट. For seat from Java 42 it feels like a great jump in quality and comfort. Apart from that, मैं फालतू नहीं बोलता हूँ. Let's just turn on the console. Let's just hi. ओए डिजिटल कंसोल. जिन लोगों को ऑफसेट वाला कंसोल पसंद नहीं आ रहा था उन लोगों के लिए अब कंसोल है सेंटर में. You get these indicator lights, ABS light, neutral. और यहाँ पर उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है. सो इफ़ यू वांट टू नो द स्पेसिफिकेशंस ऑफ these 3 motorcycles in detail, I have made a video about that as well. Click on the I button and you will get to know all the intricate details of this motorcycle. Apart from that, handlebar is raised and the posture, as you can see, I'm totally sitting upright. बाइक की height is not too much, बहुत ज़्यादा height नहीं है बाइक की. और एज यू कैन सी मैं इजीली अपने पैर नीचे रख पा रहा हूँ. और जस्ट फॉर द रेफरेंस मेरी हाइट है 5 feet 8 inches only. I am not a tall person at all. So on this motorcycle we get the bar and mirrors over here. Those people who are not a fan of bar and mirrors, I think the normal mirrors can be swapped over here, can be screwed in over here as well. यहाँ पे space तो दिख रहा है मुझे. Apart from that, the motorcycle does feel premium to the touch. Buttons are little flimsy, but I don't see these things doing in mostly anything. Trip A, trip B and odometer, that's the only thing that's happening right now. Apart from that, up, down, left, right, nothing else works. Okay, so they have included this console which is actually standard on the 3 motorcycles that we get from YEZDI right now. However, the functionality of this is actually utilized on the YEZDI Adventure only. Apart from that, this feels really nice to me. However, फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे इट्स लिटिल क्लोज्ड ऑफ. मैं जावा 42 चलाता हूँ तो इट फील्स लाइक अ बिगर मोटरसाइकिल देन दिस इज राइट नाउ. हाउएवर, व्हेन वी टॉक अबाउट डायमेंशंस एंड पावर, दिस इज एब्सोल्युटली अ नॉच अबव जावा 42. आई एम ऑल्सो अ फैन ऑफ ऑफसेट console. However, इसमें हमको center console मिलता है which does not feel odd to the eye. However, I like the offset console better. Speaking of the offset console, we get the offset console on that Scrambler. Java का जो USP था, इसके dual exhaust have been retained in this motorcycle over here, as we are able to see यहाँ पे exhaust 1 and exhaust 2. Alloy wheels हमको देखने को मिल रहे हैं इस मोटरसाइकिल में. Apart from that, जो की इंसर्ट का सिस्टम है, इग्निशन ऑन ऑफ और यहाँ से लॉक, इट हैज़ बीन रिटेन्ड ओवर हियर. टू मी इट पर्सनली फील्स लाइक दिस इज़ अ रिचुअल. हाउएवर, सम पीपल एक्चुअली लाइक कि उनकी चाबी एक ही जगह से जो करती है सब एक बार में कर दे. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवर हियर एज वी आर एबल टू सी, इन्होंने यहाँ सस्पेंशन का जो ये मेंबर है जिसके आगे इन्होंने एक प्लास्टिक का पैनल लगाया है टू हाइड द वायरिंग. पर्सनली फोटोज देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज नॉट समथिंग आई एम अ फैन ऑफ. कमांडो करके एक बाइक आती थी, उसमें इस टाइप का आता था. हाउएवर, व्हेन आई एम सीइंग इट डायरेक्टली, इट डज नॉट लुक दैट ऑड टू मी पर्सनली. स्पीकिंग ऑफ द फुट पैग्स में यहाँ पे दीज आर टाइनी फुट पैग्स, I would say, and it does not really feel
वेरी ऑफ रोड रेडी, जैसे जावा 42 में आते थे उससे छोटे लग रहे हैं मुझे ये फुट पैक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट इट डज नॉट फील वेरी ऑफ रोड रेडी, विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल. दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट फॉर द ऑफ रोड, इट इज़ फॉर द सिटी, इट इज़ फॉर हाईवेज आई वुड से, क्योंकि इसका व्हील बेस अच्छा खासा है. आई कैन कॉन्फिडेंटली से दिस इज़ एप्ट for the highways as well. Apart from that, over here you get a backrest and a tail light which is LED. However, the indicator lights are halogen as you said earlier. So the tail light looks like it has been taken from Java Perak. Apart from that, over here as you can see matte black wala exhaust which looks absolutely beautiful. Dual channel ABS milta hai isme. However, in the Roadster you do not get a switchable ABS. So let's talk about the next motorcycle, the YEZDI Scrambler. If this is not beauty, then what is? I can't say anything else, but this motorcycle is an absolute beauty. First impressions, इसकी सीट जो कि थोड़ी सी इस टाइप की है, it feels very very comfortable. It feels like मेरे ही टेस्ट के हिसाब से किसी ने बनाई है. Apart from that, this motorcycle gets an offset console. Let's check out कि दिखता कैसा है. यार ये फीचर अच्छा लगा मेरे को. हाय, इस बाइक की जो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैंने पहले वीडियो में डाली हुई हैं एंड यू कैन चेक देम आउट इन द आई बटन ओवर हियर. सबसे पहली चीज़ जो मेरे को इसमें अट्रैक्टिव लगी इस बाइक में वो है ये USB चार्जिंग सॉकेट, एक टाइप सी का, एक नॉर्मल USB. लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस बाइक इज लिटिल टॉलर देन द रोडस्टर. एज यू कैन सी मेरा पैर प्रॉपरली मैं नीचे टिकाने के लिए मुझे दूसरा पैर फुट पैक पे रखना पड़ रहा है. ये जो फुट पैक्स हैं, दीज फुट पैक्स एक्चुअली फील लाइक अच्छे से मेरे शू को ग्रिप कर पा रहे हैं. ऑल्दो आई डोंट हैव प्रॉपर राइडिंग शूज़ राइट नाउ, बट बहुत अच्छे से ये तब भी मेरे शूज़ को ग्रिप कर पा रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड व्हेन यू आर इन एन ऑफ रोड कंडीशन. दिस मोटरसाइकिल गेट्स डुअल exhaust. Yeah baby, this motorcycle gets a dual exhaust right now and this gloss paint finish is absolute beauty in my words. This motorcycle feels more natural to me. यहाँ पे इसका handlebar as you can see it is upright, however it does not feel as close to my body as compared to the Roadster. It feels a very natural position for me to sit at. अगर मैं properly define करूँ तो हिमालयन का जो हैंडल बार है, हिमालयन का हैंडल बार और इसका हैंडल बार में मुझे ये वाला ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है. एंड आई थिंक दिस मोटरसाइकिल कैन डू एज मच ऑफ रोडिंग एज हिमालयन कैन डू राइट नाउ. टू रीजन्स, बिकॉज दिस इज़ लाइटर, सेकेंड बिकॉज दिस इज़ वे मोर पावरफुल. अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट हैजर्ड स्विच. पहले करोल बाग से लगवाना पड़ता था, राइट नाउ you get a hazard switch automatically. How do you kill it? How do you turn off the hazard switch? Okay, off. Okay. Apart from that, this motorcycle gets normal mirrors, not the bar end mirrors, but the normal mirrors over here. So the bar end mirror option is not available, which is actually good because when you are off-roading, आपकी बाइक एक ना एक दिन ज़रूर गिरेगी, and bar end mirrors are not too good when you meet a crash. So normal mirrors, I absolutely love them. This motorcycle is a little tall and has a taller side stand on it, and suspension right now feels little stiff. It does not feel too light or too spongy as such. So I don't know how it will perform on the road, but as it is stiff, which means it will be good on the highway when it is under a lot of load. जैसे मैंने पहले बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, दिस मोटरसाइकिल गेट्स अ रियली क्लीन टेल. Brake light is again the same. It has been taken from the Java Perak. Over here, as I am able to see, these look like these are LED indicators, LED tail light. Good. And as the tail is tidy, it does not get a very covered tail. So they have given a really sturdy but plastic tire hugger, which will definitely help you when it comes to riding in the rain or mud. Suspension looks and feels tall on this motorcycle itself. Honestly, this is a scrambler. This gets the tires of on and off road, but looks really nice to me. So moving on to the third and the most beautiful, the most awaited motorcycle, that is YEZDI Adventure.
the real beast over here, the biggest boy of them all. Let's have a look at the adventure. On the first look, ये बाइक ना मुझे ऐसा लग रहा है कि this is going to be too tall for me because I'm just 5 feet 8 inches, and as you can see, this feels like a big bike to me right now. This is a big bike for me right now. As you can see, इसका बहुत ही लंबा साइड स्टैंड जो कि इसको खड़े रखने में हेल्प करता है, मजबूत लग रहा है टू द टच, टू द फील, इट फील्स स्ट्रॉन्ग. और मेरे पैर देख पा रहे हो तुम लोग यहाँ पे, मैं प्रॉपरली पैर पूरा जमा के नहीं यूज़ कर सकता इस बाइक को. Apart from that, from this angle, this looks like a really complete bike. The key slot is over here, and for those people who don't like to do the ritual of यहाँ से lock खोलो यहाँ से start करो, this is the new thing that they have introduced, and this is actually more practical. This is not very ritualistic. This is actually more practical. They have hidden the wires, the cables, पूरा cable tie करके they have tucked in the wires in this part, and इसमें जैसे रोडस्टर में था एक बड़ा सा प्लास्टिक पैन लगा था उन्होंने हेडलाइट के पीछे, इसमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस कंसोल इज़ एडजस्टेबल. यहाँ से इसको लूज़ करके यू कैन एक्चुअली एडजस्ट इट टू सम डिग्री. इसको कितना एडजस्ट करना चाहते हो, यू कैन एक्चुअली एडजस्ट इट टू सम डिग्री, बिकॉज या क्लासिक लेजेंड्स ये कहती है कि जब आप खड़े होकर बाइक एक्चुअली चला रहे हो, इट शुड फेस अपवर्ड्स अ लिटिल मोर देन नॉर्मल. दिस इज़ अ टॉल विंड स्क्रीन, feels sturdy to the touch, however it is not adjustable. Apart from that, you get this console जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था. इसमें नेविगेशन रिलेटेड और बाइक के रिलेटेड लगभग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. हाउएवर इस कंसोल में ये सर्कल जो दे रखा है, दिस इज about the information of the motorcycle, and this circle is about the information about your navigation and other things as well. This is not a full-fledged screen which should have been here. However, this is a step forward. This is a step that will cause change in the market. This motorcycle actually feels a very significant motorcycle, and it does get a single exhaust only because dual exhaust increases weight and is not very practical in off-road sense. So over here, as we are able to see, these foot pegs seem similar to the Scrambler, and yes, they are very grippy. They feel very grippy, and we are able to see that we have a similar brake lever over here for the foot, and it is very grippy. I don't have proper off-road shades, but still it feels very grippy. I'm actually afraid it might tear apart my shoe. So this motorcycle gets normal mirrors. As I said earlier, off-road and bar end mirrors do not go hand in hand. Does it feel too heavy? I don't think so. I mean, it feels lighter than the Himalayan, although the weight difference is not too significant. Well, I should say it is significant. Himalayan is a lot heavier. Let's accept that fact. I am happy to see that there is new competition to the Himalayan in the same segment. However, this thing gets a smaller engine than the Himalayan, but let's see what the Himalayan brings, what the Royal Enfield brings to the market after this motorcycle has been launched.